Hello student, today's topic is membrane filter. Membrane filter act as barrier to separate contaminant from water or they remove the particle cont- contaminating the water, reserve osmosis, ultrafiltration and nanofiltration all use a membrane in their different filtration process. तो देखो मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर भी होता है और नैनो फिल्टर दोनों होता है और इसमें अपन पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं फिल्टर के द्वारा, मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा। अब इसका प्रिंसिपल देखेंगे। मेम्ब्रेन फिल्टर आर माइक्रोपोरस सरफेस फिल्टर विथ पोर साइज इज रेंज 0.005 माइक्रोमीटर टू 12 micrometer. The membrane with pore size 0.2 micro to 0.45 micro used for sterilization. The membrane filter are used for microfilter, reserve osmosis and ultrafiltration. तो मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज़ किस में होता है? माइक्रो फिल्टर के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इसका। द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर आर एज फॉलो। इट शुड हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी टू अलाउ इजी हैंडलिंग, इसका हैंडलिंग इजी होता है। द एक्सट्रैक्टेबल कंटेंट शुड बी लो, इट शुड बी ऑटो क्लेवेबल एंड शुड withstand repeated autoclaving without shrinkage. It should have narrow pore size distribution. Construction देखेंगे। Membrane filter are constructed out of a wide range of synthetic material including cellulose acetate, cellulose nitrate, polyamide, nylon, polycarbonate, polypropylene and polytetrafluoroethylene, Teflon. वर्किंग देखेंगे। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज अ फिजिकल सेपरेशन method characterized by the ability to separate molecules of different size and characteristic. Its drive force is the difference in the pressure between the two sides of a special membrane. Application है used manufacturing of electronics device and semiconductors process water, industrial water used in the pharmaceutical laboratory and industrial application. Centrifugation is a method of separating molecules having densities by spinning them in solution around on axis in a centrifuge rotor at high speed. Centrifugation process Centrifugation is the process that uses centrifugal force for the separation of two liquid in a mixture. जैसे दो लिक्विड है, कोई मिक्सचर है, तो उसको सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है द एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट फ्रॉम मिल्क इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस। प्रिंसिपल देखें। A centrifuge operates by using the sedimentation principle. Here the substances are separated based on their density under the influence of gravitational force. When spun rapidly, lighter particles stay at the top and heavier particles go to the bottom during centrifugation. जिसका फार्मूला F इज इक्वल एम मास वी स्क्वायर अपॉन आर।
तो इसमें F है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, M है मास ऑफ बॉडी, V है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, R है रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रोटेशन। कंस्ट्रक्शन देखेंगे। द फॉलोइंग पिक्चर शो हाउ a super centrifuge is built. It has a hollow cylindrical bowl with an extremely small diameter. Top and bottom are supported by flexible spindles, and the top is guided by loose feet buzzings. तो इसमें ये मोटर लगा हुआ है, ये घूमता है यहाँ से, और इसमें लाइट फेस लगा हुआ है, हैवी फेस लगा हुआ है। एयर स्पेस यहाँ बीच में, रोटेटिंग बाउल है, ये रोटेट करता है जैसे फैन घूमता है वैसे, और ये फीड है, यहाँ से भेजा जाता है। वर्किंग देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ द ड्राइव असेंबली द सेंट्रीफ्यूज रोटेट्स एट अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 2000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 2000 रिवॉल्यूशन होता है, मतलब घूमता है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। A pressure system is used to introduce the feed into the centrifuge from the bottom. Use है oil purification, food production, chemical and pharmaceutical, paints and varnish. Advantage है operational continuity, produce solid when dried. Disadvantage है the structure of sediment is not uniform. नेक्स्ट टॉपिक है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। द NPBC contain a non-perforated side wall. During centrifuge, solid phase is retained on the sides of the basket while the liquid remain at the top. This liquid is removed with the help of a skimming tube. तो देखो इसमें सॉलिड फेस अलग हो जाता है और लिक्विड फेस ऊपर साइड में रहता है, और सॉलिड फेस बास्केट साइड में आ जाता है। तो ये बास्केट के आकार का होता है। इसमें स्कीमिंग ट्यूब लगा हुआ है, सॉलिड ये हो गया और लिक्विड इधर आ गया। फीड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ फीड करेंगे, यहाँ मोटर लगा हुआ है। अब प्रिंसिपल देखेंगे। इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर द सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज. The separation is based on difference in densities of solid and liquid phases without a porous barrier. The NPCB contain a non-perforated sidewall. The liquid is removed with the help of a skimming tube. कंस्ट्रक्शन देखेंगे। अंडर ड्राइवन नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ बास्केट। द बास्केट में बी मेड ऑफ स्टील और एनी अदर suitable material. The basket is suspended on a vertically shaft and is driven by motor using suitable power system. Working देखेंगे। The suspension feed continuously into the basket. During centrifugation, solid phase is retained on the sides of the basket while liquid remain on the top. The liquid is removed using a skimming tube. When suitable depth of solid deposited, the operation is stopped. use है इसका। when the deposited solid offer greater resistance to the flow of liquid. In such cases, non-perforated basket centrifuge is used.
Semi-continuous centrifuge. Semi-continuous centrifuge separation occur through perforated wall depends on the difference in the densities of solid and liquid phases. Principle in solid continuous centrifuge separation occur through perforated wall depend on the difference in the densities of solid and liquid phases. Construction it consists of perforated basket mounted on horizontal shaft and run continuously by motor. Working the rotate perforated basket is inserted through a pipe to the side of the bowl basket so that the liquid feed is distributed evenly throughout the basket. ये फिल्टर मीडिया लगा हुआ है यहाँ पर और नाइफ लगा हुआ है यहाँ बीच बीच में स्लरी लगा है फीड यहाँ से फीड करते हैं वॉश पाइप लगा हुआ है डिस्चार्ज असेंबली लगा हुआ है और ड्राई क्रिस्टल यहाँ से प्राप्त हो रहा है हमको बास्केट यहाँ लगा हुआ है और ड्राइव कर रहा है यहाँ से यूज़ है इंडस्ट्रियल ऑयल कटिंग ऑयल रोलिंग मिल लुब्रिकेंट्स